Hello everyone. I hope you're doing well. Namaste. So welcome back to SISYA Class YouTube channel. And today we are starting with a sixth grade chapter from physics. That is fun with magnets. So this is there in your syllabus in CBSE. It is also useful for ICSE and other boards also. Now magnets, we have seen it in our life and we have used also maybe. हमने ये बहुत जगह देखा भी होगा और बहुत जगह यूज भी किया होगा जब आप अपना फ्रिज खोलते हैं और जब फ्रिज को बंद करते हैं तो एकदम से वो चिपक जाता है तो दैट्स द वर्क ऑफ द मैग्नेट देयर एंड आई लेट यू नो वेयर ऑल थिंग्स we are using magnets. So magnets is fun to play around, but it also has played a key role in shaping our civilization. Our human civilization depends on it every day. And also, if you look around, all the life on Earth came into being because of magnets. We will come to that how. You must be having lots of questions regarding that. Now, before starting, let me just introduce myself first. My name is Himanshu Rai Jan, and I've done my BTech from Birla Institute of Technology. I have a teaching experience of 11 plus years, and in those 11 plus years, I have taught more than 1 million students, and I have taught across various grades 6 से लेके 12 तक and many of my students have cracked IIT and Olympiad also. So now let's move ahead. Let's talk about our day-to-day life experience with magnets. First time जब मैं छोटा था तो मैं बहुत कार्टून देखता था ठीक है and I have seen magnets in cartoons also. So they use magnets in a funny way. So you can look here that Tom and Jerry magnets were being used. So this cat has eaten basically an iron and because of that the Tom is moving around the magnet. Okay, so because of which it is going up and down. So all these things are possible. Now look at this one. Anyone remembers the name of this cartoon? Roadrunner. So basically, there is this roadrunner which is running very, very fast, and this coyote wants to basically catch it. And it tries lots of things to catch. And here you can see magnet is being used and the iron material or we can say magnetic material is getting attracted. So maybe we have seen such cartoons in our life where magnets comes into picture. उसके बाद हम देखते हैं हमने कभी मैग्नेट्स को यूज भी किया होगा और इसमें हाथ के ऊपर रखा हुआ मैग्नेट जो बहुत ही स्ट्रांग है और नीचे में आप देख सकते हैं इट्स गेटिंग अट्रैक्टेड तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो आपके थ्रू भी पास हो रही है और जैसे ही हमने मैग्नेट को उठाया तो नीचे में जो बॉल्स कनेक्टेड थी वो भी गिर गई और आप एक चीज और नोटिस कीजिए इवन दो ये सब मैग्नेट्स नहीं थे और ये अट्रैक्ट हो गए ठीक है और जैसे ही हटाया वो गिर गए गेटिंग इट तो इवन दो ऑल दीज बिकम्स मैग्नेट्स ऑल्सो जब वो मैग्नेट्स के साथ चिपके होते हैं ठीक है अब ये हो गया फन टू प्ले अराउंड और वी हैव सीन इट कि मैग्नेट्स कहाँ कहाँ हमने देखे हैं बट अब बात करते हैं कि मैग्नेट्स का यूज कहाँ आता है और हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने पेरेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को देखा होगा दे कैरी विद देमसेल्व्स तो बेसिकली वो एक कार्ड मैग्नेटिक कार्ड है ये क्या है मैग्नेटिक कार्ड इसके पीछे एक ब्लैक स्ट्रिप होती है वो मैग्नेट के तौर पे काम आती है उस स्ट्रिप में आपके पेरेंट्स का अकाउंट इंफॉर्मेशन उसमें ये भी है कि कितना पैसा है इसमें और जब हम उस कार्ड को यूज करते हैं जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं और आपने कुछ बाय किया और आपको पे करना है कार्ड के थ्रू और वो लोग क्या करते हैं एक मशीन लेते हैं और मशीन के अंदर वो कार्ड डालते हैं वो जो मशीन है ना वो भी एक मैग्नेट है ठीक है और जब वो मशीन में डालते हैं कार्ड को तो वो मशीन क्या करती है उस ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर कुछ चेंजेस करती है वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस जिससे वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है रिकॉर्ड हो जाता है और मनी गेट्स डिडक्टेड एंड इट ऑल्सो गेट्स ऑटोमेटिकली अपडेट ऑन द योर बैंक अकाउंट ठीक है तो ये मैग्नेटिक कार्ड आपके पेरेंट्स कैरी करते हैं और आपने देखा भी होगा एटीएम में डालो वहां पे भी इट्स अ मैग्नेट कार्ड नाउ हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी लैपटॉप पे या फिर मोबाइल फोन पे या फिर हम अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं हाउ मेनी यू हैव हियर्ड अबाउट इट मैनी करेक्ट all these things
gets stored where? On a हार्ड डिस्क, राइट? आपके लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल फोन में जब भी आप बाय करने जाते हो, तो आप हमेशा ये देखते हो कि इसकी मेमोरी कितनी है, लाइक 64 GB, 128 GB और 256 GB। सिमिलरली जब लैपटॉप परचेज करते हैं, वी ऑल सी दिस थिंग। और या फिर हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी खरीदते हैं। तो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इट्स स्टोर्ड ऑन द मैग्नेट। उनके पास अंदर में एक मैग्नेट होता है। तो जब भी आप कोई सॉन्ग या मूवी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, दैट कम्स थ्रू डायरेक्टली मैग्नेट। ठीक है। और आपने बहुत टाइम ये भी सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में। मैगलेव ट्रेन होती हैं। इंडिया में तो अभी नहीं आई है, बट इट्स गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। बट अगर आप जापान, चाइना यहाँ जाएंगे तो यू विल फाइंड ऑल दीज ट्रेन्स। दीज आर ऑल्सो मैग्नेट्स। ठीक है। इनके यहाँ पे मैग्नेट्स होता है नीचे में, और जिस ट्रैक पे वो चलते हैं वो भी मैग्नेट होता है। ठीक है। और ये हवा में, देर इज नो टच बिटवीन द ट्रेन एंड द ट्रैक, और ये हवा में चलती है। ठीक है, यूजिंग मैग्नेट्स। एंड कई बार आपने होटल में भी गए होंगे, एंड उस होटल में आपको कई बार वो कार्ड पकड़ा देते हैं कि ये आपका रूम की है। ओके। तो वो जो कार्ड होता है वो भी एक मैग्नेट होता है। ठीक है। और आप वहां पे लगाते हैं और वो खुल जाता है, राइट? और फिर आप अंदर में उसको फिट कर देते हैं और आपकी रूम का इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ ऑन हो जाता है, राइट? So that card is also a magnetic card. So you can see our life basically one way or the another depends on all these things. ठीक है। आप देखिए कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, स्टोरेज, इस सब में मैग्नेट आता है। ठीक है। एंड यू कैन सी इट्स एवरीवेयर। सो इम्पोर्टेंस इज ह्यूज। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर important application of magnets. I told you ना, हमारी सिविलाइजेशन मैग्नेट्स पे डिपेंड करती है। और इफ आई वांट टू लाइक कोलैप्स द मॉडर्न वर्ल्ड, और या फिर जो भी मॉडर्न वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है, एंड किसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानूंगा, आई से इट, दे आर मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बिना ह्यूमन सिविलाइजेशन जो इस स्तर पर पहुंची है, दे वुड हैव नेवर डन इट। ओके। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज डन थ्रू मैग्नेट्स। ठीक है। आप कोई भी पावर प्लांट में चला जाइए, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कोल, गैस, ये सब में फ्यूल जो यूज हो रहा है वो डिफरेंट है मे बी, बट अल्टीमेटली दे ऑल हैव मैग्नेट्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। और आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना दिस मॉडर्न वर्ल्ड कैनॉट रन। और ये कहां से आ रही है? ये आ रही है मैग्नेट्स के थ्रू। ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट विदाउट मैग्नेट्स देयर वोंट बी एनी मॉडर्न वर्ल्ड। इट विल कम टू स्टैंड स्टिल। So on the back of magnets, humans have created this modern world. So magnets are very, very important. And let me tell you more. Okay. Without magnets, other species also won't exist. How? Our Earth is also a huge magnet. Okay. Earth के अंदर ना बहुत सारा लिक्विड आयरन ओर है, और बहुत सारे निकल लिक्विड है। तो वो रिवॉल्व करते रहते हैं अंदर में। एंड उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक कवच के तौर पे काम आती है। इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम व्हाट। आपने बहुत टाइम में न्यूज में ये भी सुना होगा कि एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म आ रहा है। ठीक है। और ये सोलर स्टॉर्म बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है। जीपीएस को भी इफेक्ट करता है, सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन को भी इफेक्ट करता है, सैटेलाइट की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करता है। ठीक है। इवन इट इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। तो ये कवच जो क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है इस सोलर स्टॉर्म से। ठीक है। और मान लीजिए अगर ये कवच नहीं है, क्या होगा? इफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज नॉट देयर, व्हाट्स गोना हैपन? ये जो सोलर स्टॉर्म है ना, ये पास थ्रू करेगा और अर्थ का जितना भी एटमॉस्फेयर है उसको रिप अपार्ट कर देगा, पूरा एटमॉस्फेयर को गायब कर देगा। और अगर एटमॉस्फेयर गायब हो गया तो all the species will go extinct. It will be like a mass extinction event. So you can understand that this magnetic field, basically the coverage, is protecting us
giving us a home to stay, home to live. Iske bina, it will not be a home. Okay, no one will exist here. Okay, so you can see other planets also. Some they don't have this magnetic field, और उसके कारण उनके पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है. So you can see magnets are not only important for the modern world, it is also important for the life to exist on Earth. तो ये क्या हो गया? ये one of the most important topic of our life. ठीक है? So we should respect magnets. So whenever you see next time a magnet in your life, you should think that without it, life cannot exist. Okay. Now let's move ahead. You have seen magnets, you have played around, but you must have also tried sticking magnets to wall also, or a wood or a plastic. Okay. And you may have noticed that it's not getting stuck to all the things. And you get confused, okay, why it is getting stuck to some objects, but it's not getting stuck to everything. Okay. You may have this confusion. Okay. Now let's study about it. Why it gets attracted to some things only and not to everything. So first of all, if you bring an iron close to the magnet, अगर आप लोहे को पास लाएंगे तो it will gonna feel the attraction towards the magnet. ये क्या होगा? खींच लेगा. क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट है it attracts magnetic materials. तो जो भी मटेरियल आयरन से अट्रैक्टेड होता है, सॉरी मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. जैसे आप निकल को ले लीजिए, निकल इज अट्रैक्टेड, देन कोबाल्ट इज देयर, कोबाल्ट इज अट्रैक्टेड. सिमिलरली आयरन इज देयर, आयरन इज आल्सो अट्रैक्टेड टू द magnet. Okay, so these are all magnetic material. It attracts only certain materials, not everything. It will not attract wood, it will not attract plastic, rubber, or let's say wood. No, glass, no. Even your skin, no. Okay, so it only attracts certain materials which we call magnetic materials. Okay, now let's move ahead. Here, materials that are attracted to magnets are known as magnetic material, and the materials which are not attracted to magnets are known as non-magnetic material. It can have lots of examples: wood, plastic, we have rubber, many things, like you can say silicon. You have metals also, copper. Copper is also not attracted to magnets. Aluminium, many other things you will find it's not attracted. Even water not attracted. Okay, so those are all non-magnetic material. Magnetic materials are relatively less. Okay, like we have iron, cobalt, nickel, etc. There are other certain things also which are attracted to the magnets, and those materials are known as magnetic materials. Okay, now let's move ahead. Let's study in detail more. So here you can check, these are all things which are attracted, and these are all things which are not attracted, non-magnetic material. And there are many more examples. Let's look forward. Now this magnet, you will find when you go in market and you purchase a magnet, आपने देखा होगा उस पे कुछ लिखा होता है, NS लिखा होता है, एक जगह एक तरफ N लिखा होता है और एक तरफ S लिखा होता है. What are those things? और इवन आप उस मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के थ्रू मूव करोगे, आप उसको उसके अराउंड मूव करोगे, देन यू विल फाइंड कि हर जगह मैग्नेट के different different amount of iron is getting stuck. It's not like in all places it's getting same amount of iron fillings. So you can see where N and S are written, there the iron is stucking more. This more iron is getting attracted. But if you take other points, look at the center. Here you can see less amount is getting attracted. But on the edges here, this is more iron is getting stuck. So you can see here attraction is more.
And as you move towards the center from the edges, in this case, the attraction decreases. Okay. Now, these special points where the attraction is more, we call it the poles of magnets. And every magnet, doesn't matter what the shape is, okay, whether it's circular, whether it's square, cube, or random shape, they will always gonna have two poles, 2 points where maximum attraction is there. And you must be wondering, sir, why? Why they have maximum attraction? Why not other points? So look at the next diagram here. You will notice that there are certain lines which are coming out of north, which is N, and going inside S, which is south. So here you can see the number of lines close to N and going in, it's more as compared to if you say you take nearby these points, you take other points. There you can see the concentration of lines is less as compared to close to the poles of magnet. So wherever the concentration of line is more, there the attraction will be more. Okay. So each line is basically giving rise to attraction. If more lines are there, more attraction will be there. Less lines, attraction will be less. And as you go away from the magnet, you can see the gap. If you draw this one, you will see the gap between the lines, it's increasing. And because of which the attraction or the effect from this magnet is also reducing. So that's why as the magnet is far, its effects on the iron which is far is less. But if iron is close, there the concentration of lines are more, and because of which the attraction will be more. So we have two special points on every magnet where the attraction is maximum. Other points will gonna have less attraction based on the concentration of lines. Okay, so you have to count the number of lines. If more lines are there, more attraction, less line, less attraction. That's the basic. Okay, so those special points where the attraction is maximum, we call it the poles of magnet. And every magnet have two poles. हर मैग्नेट के पास कितने पोल्स होंगे? दो मैग्नेट, दो पोल्स होंगे. एंड डजंट मैटर व्हाट इज द शेप, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या फिर रैंडम शेप का भी हो, हर एक मैग्नेट के पास दो होंगे, ना एक ना तीन, ऑलवेज दो. ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. लुक हियर. Which point feels more strength of the magnet? So now on the diagram you can see B is closer to the magnet and A is little bit far. So can you tell me in the chat box which one will gonna feel more strength of the magnet? Yes, the answer is, you can see here the number of lines here, it's more concentrated as compared to A. So obviously the strength will be more at B. So B is greater than A in terms of the strength of the magnet. Okay. So closer you are to the magnet, more strength you're gonna feel it. You must have noticed, like you bring a magnet close to the iron fillings, they feel attraction. Okay. But if you are doing it from far, they don't feel much. Okay. So right now, let's say there is a big magnet kept in some other room. Okay, and I'm keeping the iron fillings here. They will not feel much of the attraction. But if I bring that the magnet close to this iron fillings, they're gonna feel the attraction. Okay, because now the concentration of line will be more close to the iron fillings. Okay, now let's move ahead. Look here. Look at the next question. Which point have maximum attraction? So now we have 4 points, A, B, C, D. So which one has more attraction? Maximum. So count the number of lines first. So look, if you count for A, it is approximately 13 lines if you count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So approximately 13 lines are there. If you check for B, 1, 2, 3. For B, it is 3. And if you check for C,
It's 1, 2, 3, 4. And if you check for D, it's 2. So you can see undisputed winner here is A, where the maximum number of lines are there. So A will have maximum attraction. Now, if I choose like what is a ranking, then you can see you have to rank it from greatest to smallest. You can think about it. More lines, more attraction. Less lines, less attraction. Okay. So here the A will have the maximum attraction and A is also a pole. So pole is always a special one. Now let's say I have one more point which is saying this one. Let's say E. Now in this case, the strength of A and E is approximately equal because the number of lines coming out of north is equal to number of lines going inside south. जितनी लाइंस नॉर्थ से निकल रही है ना उतनी ही लाइन साउथ के अंदर जाएंगी. ठीक है. The number of lines on north and south they are equal, so the strength will be equal. Why it is equal? Because these lines always make a closed loop. They always make a closed loop. So this is very, very important. Okay, so pay attention that any line which is starting from north, it will gonna end in the south. Okay, now do you think that it starts from north and just stops at south? Or do lines also go inside the magnet? What do you think? क्या वो सिर्फ नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ तक जाती है या फिर वो साउथ से भी नॉर्थ जाती है अंदर में? क्या लगता है आपको? सोच के देखिए. व्हाट डू यू थिंक दैट लाइंस जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड स्टॉप्स एट साउथ और या फिर वो अंदर में भी जाती है? व्हाट डू यू थिंक? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. Okay, so here let me tell you, let me just rub all this thing. Since we have studied that they always make a closed loop. ठीक है. अब यहां से यहां तक ये कोई क्लोज्ड लूप तो नहीं है. इट इज स्टिल ओपन बिकॉज यहां और यहां पे कनेक्शन नहीं है. तो आई वांट टू मेक अ क्लोज लूप. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अंदर में भी ये लाइंस को मीट करवाना पड़ेगा. And they do that. So the lines goes from south to north inside the magnet and outside the magnet north to south. So let me write down here. Outside lines are going north to south. And if you talk about the inside of the magnet, the lines are going south to north. And that's how they're going to create a closed loop. These are very, very important things. Okay. And now let's study more. Here, if you notice one thing, let me just rub this one. If you notice one thing here, that these lines, they are not intersecting each other. If I take one point anywhere, I take here, anywhere, you will see that at one point, let's say this small point I'm taking, it's not like one line is going like this, and through that line, through that point, there is one more line going like this. They are not intersecting. Okay. You will not find any point here where the two lines are intersecting with each other. Okay. Never. These lines never intersect each other. Okay. So you can write this one also. The magnetic field lines, they never cross each other. Never cross each other. Why? Why they don't cross each other? There must be some reason, right? So now, if I keep a magnet, let's say, or let's say
I keep an iron bar or an iron filling. Okay. So if I have two lines, one is going this way and one is going this way. If I have two lines, then what I mean is I'm going to have two directions. So this iron will go in which direction? Will it go this way or will it go this way? Think about it. That's basically it's applying a force on the iron. And now it's applying in two directions. It's not possible. At one point, it can be in one direction so that it can go in one particular direction. It's not like it's trying to go here also, here also. It's not, it doesn't make sense. Okay. So that's why the magnetic field lines, they can never cross at one point, it's in one direction. If you draw, it's along that line. Okay. So this is very, very important. They never cross each other. If they cross, then at one point, it will gonna have two directions, which is not possible. Okay. Now let's move ahead. Rank the attraction from greatest to smallest. Think about it. We know the numbers, right? We have the numbers A 13, then C 4, then B 3, and then we have D 2. So the minimum one will be the D, least attraction. Then B, then C, then A. So that's the answer. A, C, B, D. Option 2 will be the answer. Easy peasy. More lines, more attraction. Okay, awesome. Let's move ahead. Now, let's try to break the magnet. आपने कभी कभी खेलते खेलते मैग्नेट को गिरा दिया और वो टूट गया. तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो टूटे हुए मैग्नेट्स भी वो मैग्नेट ही हैं. ये नहीं कि टूट गया और ये चीज मैग्नेट नहीं बची. They will still behave as a magnet. Magnet and a magnet. Okay. And we know that every magnet, doesn't matter the shape, will always gonna have two poles. So here, this magnet was having two poles. Now, if I break from the between, so here it was north. So here somewhere it will come as south. Okay. And similarly, here was south. Then it's not like it's a magnet with just south pole. Not possible. It will have a north this side. Okay. So every magnet, doesn't matter the shape, the size, they will always gonna have two poles. Even if you break it in further pieces, let's say I break it further. So it will become north, south, south, north. Similarly, the bottom one also I keep on breaking. South, if I break it, north, south, north. Okay. So every magnet, you keep on breaking further, further, further into smaller, 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 smaller pieces. You keep on breaking, 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 and ultimately you reach the atomic level, atoms, because these magnets are also made up of atoms. And then you further break it into electron, protons, neutrons. This is still, they are magnets. And if you take electron, electron will also have north pole, south pole. Okay. Now, if you try to break this electron further, even scientists are trying to do that, they still couldn't do it. Okay. So you can see this is one of the smallest magnet where you can see it has two poles. And if you try to break it further, it's not possible. It's not happening. Okay. So now let's move ahead. Let's do some questions here. If a bar magnet is broken into 55 pieces, then the number of total poles are. अब आपने क्या किया? एक बार मैग्नेट था और उसके पास दो पोल्स थे नॉर्थ साउथ. अब इसको आपने 55 छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया. द नंबर ऑफ टोटल पोल्स कितने होंगे? एक मैग्नेट पे दो. 55 मैग्नेट्स पे कितना होगा? 55 इंटू 2
That will be 110. Okay, so total number of poles on 55 pieces will be 110. 55 north and 55 south. On each magnet, it will be one north, one south. It's not like कि एक magnet में north north हो जाए. Not possible. क्यों? क्योंकि देखो यहां से भी लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ से लाइन निकलती है और यहां से भी लाइंस निकलेगी. इट्स नॉट पॉसिबल. तो अंदर में क्या हो रहा होगा? गेटिंग इट? दे नीड टू मेक अ क्लोज लूप. सो क्लोज लूप ऐसे होता है, एक जगह से निकली और वो वापस आ गई, तभी वो क्लोज लूप बनेगा. राइट? सो यहाँ नॉर्थ से निकल रही है और यहाँ साउथ से अंदर चली गई. तो यू विल नॉट हैव अ मैग्नेट की जिसके पास नॉर्थ नॉर्थ हो, या फिर साउथ साउथ हो, या फिर जस्ट साउथ हो, या फिर नॉर्थ साउथ नॉर्थ हो गया, तीन पोल्स हो गए. नहीं, they will always be two poles and it will be north and south. नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी एंड साउथ के अंदर जाएंगी. These are invisible lines. You can't see. Now let's move ahead. Let's look at the next question. If a magnet is broken into 8 pieces, how many north poles are total now? Now we have 8 pieces. एक मैग्नेट था, इसको 8 pieces में ऐसे ब्रेक कर दिया. So how many we gonna have now? You can type in the chat box कि नॉर्थ पोल्स कितने होंगे. तो एक मैग्नेट पे एक नॉर्थ, तो 8 पे कितने होंगे? Easy peasy, right? So that will be 8 north poles. तो 8 नॉर्थ होंगे एंड 8 साउथ होंगे. टोटल कितने होंगे? 16. So आंसर will be option 3, which is 8. Now, I hope this is clear. Let's move ahead. Let's define magnets now. Okay, like we have studied that. हमने कहाँ पहली बार देखे, ठीक है. फिर इनका यूजेज क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में यूज होता है, फिर आपकी हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, लैपटॉप, उसमें भी होता है. फिर जब आप होटल में जाते हो, वो आपको एक कार्ड देते हैं, वो भी मैग्नेट है. मैनी अदर प्लेसेस यू कैन फाइंड इट. एंड इवन मैग्नेटिक जो बुलेट ट्रेन होती है, मैगलेव ट्रेन बोलते हैं, उसमें भी यूज होता है. और फिर हमने बात की कि पूरी जो सिविलाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? मैग्नेट्स पे. क्यों? क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन क्या यूज करती है? इलेक्ट्रिसिटी डेली. और वो इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेट्स. ठीक है. फिर हमने देखा कि नॉट ओनली जस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, एवरी स्पीशीज डिपेंड ऑन इट. ओके. क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ एग्जिस्ट करवाता है. ठीक है. अगर अर्थ के पास वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो कवच नहीं है, तो क्या होगा? सोलर स्टॉर्म क्या आएगा? रिप कर देगा पूरे एटमॉस्फेयर को, और एटमॉस्फेयर बचेगा ही नहीं. और अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई लाइफ नहीं है. नथिंग विल गोना एग्जिस्ट. ओके. So atmosphere is must for the life to exist, and for atmosphere to exist, we need magnetic field. So magnetic field is like a superpower here. Okay, without it, nothing can exist. Entire modern world collapses, or the mass extinction gonna happen. If let's say, for example, tomorrow the Earth's magnetic field disappear, then everything will die off. Okay. So now let's define this thing. Define magnets. Magnets are rocks or metals that create an invisible field around themselves. तो ये जो magnets हैं, ये क्या करते हैं? अपने अराउंड एक इनविजिबल फील्ड लाइंस क्रिएट करते हैं. इन फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं? इन फील्ड लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और हमने पढ़ा था कि ये दोनों लाइंस, जितनी भी लाइंस है, वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी. Because at one point it will have two directions, which is not possible. At one point it will always be in one direction. Okay. And more the concentration of lines, more will be the attraction. And these fields attract other magnets and certain materials. ये other magnets को भी attract करते हैं, या repel भी कर सकते हैं. And certain materials which we call as magnetic materials. Okay. Now let's move ahead. Law of nature. There is one law also here. Law means it's universal. ये सिर्फ आपके शहर में, या फिर आपके कंट्री में, या फिर आपके ह्यूमन वर्ल्ड में, या फिर अर्थ पे, नो. या फिर जस्ट सोलर सिस्टम का लॉ है? नो. वी आर टॉकिंग अबाउट एट द यूनिवर्स लेवल. ओके. इट होल्ड्स ट्रू थ्रू आउट द यूनिवर्स. सो we trying to stick
like poles together. Like sometimes you must have brought same poles of two different magnets close. तो आपने फील किया होगा कि ये कभी भी ना चिपकते नहीं है। ठीक है, ये कभी नहीं चिपकते। ये क्या करते हैं, ये दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे से दूर, रिपल्शन। ठीक है, जैसे हम लोग किसी दूसरे लोगों से रिपेल करते हैं, ठीक है, कि नहीं इसके साथ मेरे को नहीं रहना है, या फिर सम रिलेटिव्स आर देयर वी रिपेल कि वो घर आ गए तो अपन गायब है वहां से। ठीक है, सो सिमिलरली इन मैग्नेट्स आल्सो हियर, व्हेन द लाइक पोल्स, सेम पोल्स एक दूसरे के पास लाने की कोशिश हम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस इज अ लॉ। ओके, व्हाट डज द लॉ सेज? लॉ सेज लाइक पोल्स रिपेल। ठीक है, सिमिलरली when you bring north is also like same, they will also gonna repel. Okay, so south repel, north repel. But when you come to north and south, here you can see it's unlike poles. Here what happens? Attraction happens. They attract each other. They will bring close to each other. So that's the law of nature. Opposite poles attract and same poles repel each other. So here they will gonna go away. Okay, and here they will gonna attract. Why they do that? See, law doesn't have explanation. It's just a statement. Okay, we cannot explain why this happens. It just happens, and it's a statement. And using this statement, we can explain many things. Okay, so law of nature doesn't have any explanation. It's just a statement which is valid throughout the universe. ठीक है, ये पूरे ब्रह्मांड में वैलिड है। आप किसी और प्लैनेट, किसी और गैलेक्सी में भी चले जाएंगे, मैग्नेट्स लेकर, वहां पे भी वो सेम वे में बिहेव करेंगे। Okay, so that's the law, valid throughout the universe. Okay, and if you find somewhere where they are not attracting or repelling, you can let us know. You will maybe get the Nobel Prize in Physics. Okay, to prove otherwise. Now let's move ahead. Earth as a magnet. We must have like heard about it कि अर्थ के भी पोल्स होते हैं, अर्थ भी मैग्नेट है। क्या इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट किसी ने बरी कर दिया क्या, कि हाँ बहुत बड़ा एक मैग्नेट मैंने इसमें फिट करवा दिया ह्यूमंस ने या फिर किसी और ने, कि और ये अर्थ एज अ मैग्नेट बिहेव करे? ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस एज अ ह्यूमन टू create such a big magnetic field on a earth level. Okay, so what is there inside the earth? So inside the earth, it's hot. Okay, as per scientists, it's very hot, and because of this hotness, अं- अंदर में जो भी मटेरियल है ना, वो लिक्विड गैस फॉर्म में ज्यादा है। इवन द रॉक्स आर देयर, ओके, बट दे मेल्ट, बिकम्स लिक्विड एंड इन गैसियस फॉर्म। ओके, और वो लिक्विड और गैस जो कि बहुत गर्म है, वो बहुत मूव अराउंड करता है। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होती है, ठीक है, वो कहां से आती है? अंदर से ही तो आती है, अंदर में बहुत गर्मी है। ठीक है, तो वो सरफेस पे जैसे गर्म चीजें ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक है, लाइट वेट होती है। जैसे आप चिमनी की बात करो, वो ऊपर की तरफ जाती है। या फिर कभी भी आप आग लगाते हो तो स्मोक हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो गर्म चीजें हल्की होती हैं, वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ठंडी चीजें भारी होती हैं। तभी आप एसी को ऊपर लगाते हो ना, ताकि ठंडी हवा वो छोड़े नीचे आए, ताकि सारे कमरे में फैल जाए। ये नहीं कि मैं एसी को सबसे नीचे में लगा दूंगा और वो ठंडी हवा छोड़ रहा है, वो सिर्फ सरफेस पे है, और ऊपर में जो गर्म हवा है वो गर्म ही रह गई। तो उससे क्या होगा कि पूरा कमरा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, बट आप ऊपर में लगाते हैं तो वो पूरा सर्कुलेट होती है। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अंदर में बहुत गर्मी है, तो क्या होगा? लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ज्यादा होगा, और वो मूव करता है। तो वी हैव मोल्टन आयरन एंड निकल ऑर्स जो मूव करते हैं अंदर में। उसकी मूवमेंट के कारण अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यहां पे जो किया है, वी हैव जोग्राफिक नॉर्थ, और यहां पे है जोग्राफिक साउथ। ये मतलब एंटार्क्टिका हो गया, एंड यहां पे क्या है? आर्टिक सर्कल मान लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया जोग्राफिक साउथ एंड जोग्राफिक नॉर्थ। अपन बोलते हैं ना कि साउथ इंडिया नीचे की तरफ है, राइट, एंड नॉर्थ ऊपर, कश्मीर इज इन नॉर्थ, एंड लेट्स से आई एम एट दिल्ली, ओके, सो नॉर्थ ऑफ मी इज अप विच इज कश्मीर, साउथ इंडिया लेट्स से तमिलनाडु इट्स इन साउथ, ठीक है। अब इसमें देखो, ये हो गया जोग्राफिक, बट आप ये चीज नोटिस करो कि यहां से लाइंस निकल रही हैं, गेटिंग इट? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेट से लाइंस अगर निकल रही है तो नॉर्थ होता है, और यहां पे ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ। आपको एक चीज नोटिस करनी है, ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स नहीं है कि जो जोग्राफिक नॉर्थ है वो ही मैग्नेटिक, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, बट दे आर क्लोज, दे आर क्लोज। सो जोग्राफिक नॉर्थ इज क्लोज टू द मैग्नेटिक साउथ। Similarly, below where Antarctica is there, that's geographic south and it's close to magnetic north. ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है आप देखिए। अगर आप इस पे वो लगाएंगे कंपस, अगर आप अपने हाथ में कंपस रखेंगे तो ऊपर क्या है, मैग्नेटिक साउथ, नीचे क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो कंपस कैसे अलाइन होगी, कंपस अलाइन होगी, अब ये मैग्नेटिक साउथ जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ को। तो आप देखोगे जो कंपस का रेड वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ करेगा, तो ऊपर वाली डायरेक्शन कश्मीर की तरफ वो पॉइंट करेगा, ठीक है, और जो नीचे में है ऑपोजिट टू द रेड वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, ठीक है। तो कंपस किससे अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक साउथ, नॉर्थ का जो है रेड वाला पार्ट वो मैग्नेटिक साउथ से अट्रैक्ट होगा, और जो साउथ है कंपस का वो किससे होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ना, opposite poles attract, that's the concept, ठीक है। let's look at the next one, okay, तो आप देख सकते हैं कि रेड वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये ग्रे वाला साउथ है, ग्रे वाला पार्ट साउथ है, ठीक है। तो आप रेड वाला साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है और ग्रे वाला नॉर्थ से, so that's how the compass works, ठीक है। let's look at the next one, देखिए ये ब्लू, ये जो है ये साउथ है, ठीक है, और ये यहां पे क्या है, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को, और यहाँ पे साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा, रेड वाले को। तो रेड वाला इसके साथ आ जाता है, देखना जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो रेड वाला इसके ऊपर पॉइंट करेगा, यू कैन सी इट्स पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन, एंड हियर यू कैन सी द ब्लू वन इज पॉइंटिंग, मैग्नेटिक नॉर्थ अट्रैक्ट्स द साउथ। I hope it's clear. So that's how the compass works. Okay, let's move ahead. A freely suspended bar magnet rests in which direction? It's easy. It rests in the north-south direction. ठीक है, जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, कश्मीर और कन्याकुमारी वाली डायरेक्शन में। इट्स नॉट लाइक कि अरुणाचल और गुजरात वाली डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। Possible cause of Earth's magnetic field is movement of iron or molten iron at Earth's core, revolution of Earth around Sun, both 1 and 2. So the answer here is it's not 2. Earth की revolution Sun के around कोई effect नहीं करती magnetic field पे. That's the option 1 only. Let's look at the next one. Which of the following is true of magnets? Like poles repel each other, opposite pole attracts each other, magnets have two poles, north and south. All the above. So all three are correct. So that's why all the above is correct. Let's look at the next question. The north pole of the bar magnet is attracted towards the north pole of bar magnet is attracted towards the earth. Magnetic south होगा, ये तो पता ही है कि साउथ से अट्रैक्ट करे, और मैग्नेटिक साउथ इज वेरी क्लोज टू द geographical north pole, correct, so that's why it will be 2 3, okay, so that will be 2 and 3, and that's why option 4 is correct, both 2 and 3. Okay, now let's look at the next one. North pole of a magnet can be identified by
another magnet, no matter whether the poles are marked or not. So let's say we have a magnet. Here I don't know which one is north or which one is south. And I want to identify other magnets north. Okay, whether this is north or this is north, I don't know. Okay, so can I identify using this thing? No, because let's say this thing gets attracted to this. So I don't know whether this is north or south or this is north or south. I can't tell, correct? Because north and south attracts. But which one is north or which one is south? I don't know. So that's why this is not possible. Using an iron bar? No. Why? Because even south pole will also gonna attract, na, the iron bar. So this is also not possible. And next, using iron fillings also this is not possible. It's the same like using iron bar or iron filling, it's the same thing. Both will attract south or north. So I can't identify. Another magnet having its poles marked as north and south. अब मान लो कि एक में नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड है, ठीक है, और अनमार्क्ड वाले को इसमें पास में लाया, तो मान लो यहाँ पे हुई रिपल्शन, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, लाइक पोल्स रिपेल करता हूं, मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ये नॉर्थ ही है, ठीक है। और मान लो अगर यहाँ पे हो गई अट्रैक्शन, मान लो यहाँ पे हो गई अट्रैक्शन, पास आ गए, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, साउथ होगा और ये नॉर्थ हो जाएगा, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट सम हॉट क्वेश्चन। ओके, if a magnet is broken, this one we have already done. Let's look at the subjective question. Imagine you are lost in a dense forest without any digital device. How can you use natural magnetism or a simple compass to find your direction? Explain the principle. Now, you don't have any digital device. Digital device sometimes have compass in your mobile phone. Sometimes inbuilt compass is there. So the answer is simple. First of all, let's say you have compass. It points, the red pot points towards the north. It will show you the geographical north. तो रेड वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ होता है, और ये पॉइंट करेगा कहाँ, मैग्नेटिक साउथ की तरफ, जो कि जोग्राफिकल नॉर्थ होता है, तो इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट टू नो द अदर डायरेक्शन, साउथ ईस्ट वेस्ट। लेट्स से यू डोंट हैव अ कंपास, व्हाट यू कैन डू, लेट्स से यू हैव जस्ट अ मैग्नेट, आपके पास मैग्नेट है सिर्फ, तो आप क्या करोगे, एक निडल को लेंगे, पिन, उसको रब करेंगे अपन मैग्नेट के ऊपर, तो वो पिन क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट बन जाएगी। अब मैं उसको क्या करूंगा, एक पत्ते में थोड़ा सा पानी लूंगा और उसके ऊपर ऐसे रख दूंगा, ठीक है। कोई भी लकड़ी को अंदर डाल के, जैसे एक छोटा सा लकड़ी का पीस लूंगा और उसके अंदर, और या फिर लीव के अंदर भी डाल के पानी के अंदर फ्लोट करा दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि वो पिन जो है अपने आप नॉर्थ साउथ की ओर सस्पेंड हो जाएगी और उससे अपने को पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ साउथ है, ठीक है। So here, this way you can write, in a forest I can use a compass to find direction. A compass works on the principle that earths behave like a giant magnet. The magnetic needle inside the compass align itself with the earth's magnetic field and points towards the magnetic north. By knowing where the north is, I can figure out all other directions. If a compass is not available, I can magnetize a needle by rubbing it with the magnet and place it on a leaf floating in a still water. The needle will align with the magnetic field of the earth, acting like a makeshift compass. So that's how you can try. Next question. If a bar magnet is cut into 3 unequal parts, will each piece still behave like a magnet? Justify your answer based on concept of magnetic poles. So what we know, that every magnet will always gonna have 2 poles, 2, 2, 2. So each smaller magnet will also gonna, if you bring close to each other, they will attract or repel based on the poles. Okay, all these things will be. सोचो क्या कर सकते हैं और, तो ये मान लो ये छोटे मैग्नेट बने, नॉर्थ था इधर और ये साउथ था। आप इस मैग्नेट को अगर इधर उधर लेके आएंगे तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट को अगर मैं इसके पास लाऊंगा तो रिपेल करेगा, तो मुझे पता लगेगा कि ये भी मैग्नेट ही बिहेव हो रहा है। सिमिलरली यू कैन डू द सेम थिंग विद दिस वन। ओके, दिस इज अ वन वे। Okay, so yes, each piece will still behave like a magnet. This is because the magnetic pole always exist in pairs, north and south.
When a magnet is cut, each new piece will form its own north and south pole, and the magnetic domain within the material rearrange themselves such that each smaller piece becomes a complete magnet. Therefore, even unequal pieces will exhibit magnetic properties. But उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, मान लो ये बड़ा मैग्नेट था और ये छोटा मैग्नेट पीसेस कर दिए, तो ऑब्वियसली इन तीनों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द बिगर वन। ठीक है, क्योंकि तोड़ने के कारण ना कुछ डिस अलाइनमेंट में इश्यू आ जाता है, डिसअलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। इवन ये स्मॉलर मैग्नेट की मैं कंपेयर करूंगा इस बड़े से, तो ऑब्वियसली कम होगी ना। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट one. Suppose Earth do not have its magnetic field. What would be the impact of human navigation and technological system? Evaluate with real life example. एक तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कुछ भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ओके, एंड व्हाट ऑल थिंग्स विल बी पॉसिबल, नहीं होगा जो। लेट्स रीड इट आउट। विदाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, नेविगेशन यूजिंग कंपास वुड नॉट बी पॉसिबल। जो नॉर्थ साउथ वाला जो कंपास था वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। No magnetic field to align with. This would severely impact sailors, pilots, trekkers who rely on traditional navigation methods. Moreover, Earth's magnetic field protects us from harmful solar radiation and cosmic rays. Without it, satellites, power grid, and communication systems could suffer damage from solar storm. For instance, aurora would disappear and increased radiation could affect astronauts in space, airline passenger on high altitude polar routes. इसके अलावा आपका एटमॉस्फेयर भी रिप अपार्ट हो जाएगा अगर मान लो कि सोलर स्टॉर्म सडनली सर्ज हो गया। तो दिस प्रोटेक्टिव लेयर मेक श्योर दैट हमारा एटमॉस्फेयर बचा रहे और लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन टुडेज सेशन, एंड इफ यू हैव एंजॉयड यू कैन hit like, share, subscribe. You can share to your friends that you can study magnets. Okay, and don't worry, if you want to study more, you can scan this QR. This QR will land you to our SISYA app, and where we have lots of courses going on, especially for you, grade 1 to 10. Even we have JE Foundation. Okay, if you are preparing for JE, you can also find such courses. So you can hit like, subscribe, and share to your friends. And every day we do such lectures, and even from 5 p.m. you will gonna have a lecture from biology teacher. Okay, now thank you very much, and I hope you have enjoyed the session. Take care, bye bye, see you in next class.